हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2021 क्वेश्चन पेपर। आज हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं। एंड इन टुडेज न्यू दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, बार बार मैं न्यूज एनालिसिस बोल देती हूँ क्योंकि आदत लगी हुई है। तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या करने जाएंगे? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेमर। यूपीएससी का माइंडसेट पढ़ेंगे, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया उसका माइंडसेट देखेंगे। And questions were conceptual, or they were current affairs based, or they were factual. All of this we are going to understand in detail so that you for the prelims 2022 and 23 be prepared very wonderfully. अगर आप 2022 या 23 के एस्पिरेंट हो तो आप अपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको, उसके लिए हम एक बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ओके, so let's get started. Class PDF will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. You can download it directly from there. क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग डाउन शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। इस लेक्चर के दौरान शॉर्ट नोट्स लेते रहिएगा, बिकॉज दीज शॉर्ट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीलिम्स, द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1। नाउ वन मोर थिंग, नाउ टोटल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम क्या करने वाले हैं, हम 10 का सेट्स बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक अ 10 क्वेश्चन सेट एंड देन इन एवरी क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चन सो दैट इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन यू। हम हर क्लास में ना 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स 2021. The first question is, now see, question is that they have given you 3 statements and they are asking you which of the above statements are correct. आपको उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बट द रियल ट्रिक लाइज इन द स्टेटमेंट दैट दे हैव फॉर्म्ड। जिस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया है ना, उसमें ट्रिक आता है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 इज सेइंग सर्टेन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया give the central government right to issue directions to RBI in public interest. Statement 3 is saying governor of RBI draws his power from RBI Act. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? We will use elimination technique in this question. First of all, statement 1, look at it. Governor of RBI of India is appointed by central government. Now this question has been taken from a mix. Mix means Indian polity की जो बुक है M लक्ष्मीकांत की, वहां से plus the current affairs. The reason why they have framed this question is the current affairs, because in the news there have been many articles since 2018 that have been published in Hindu newspaper regarding the tussle between the center and RBI. RBI और सेंटर के बीच में जो टसल चल रही है उससे रिलेटेड 2018 से 2021 तक काफी आर्टिकल्स, काफी एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो लिंक तो आपका करंट अफेयर्स का है, बट क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है। Okay, link is the current affairs. Why this question? Why the UPSC examiner or the question framer thought about this topic? That is because of the current affairs. But the question is taken from the Indian polity, the conceptual part. Okay. So first statement, governor of RBI of India is appointed by central government is correct. पहला statement तो आपका absolutely correct है. Yes, the governor of RBI is appointed by PMO on the recommendation of finance ministry. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के के पास पावर होती है आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने की। Look at the second statement. Here the trick comes. Certain provisions in Constitution of India give central government right to issue directions to RBI in public interest. Now, central government, yes, it in certain cases it has the power to give directions to RBI in public interest. But that is not mentioned in Constitution of India. That is mentioned in section 7 subsection 1 of RBI Act 1934. So this is the trick. Now students who have crammed this part कि हाँ central government can give directions, they have just ratified it, they will instantly mark second as the correct statement. But students who have understood it analytically when they were studying the newspaper as well as the books, the M Lakshmikant book, they know that here the trick is the word is written Constitution of India, which is absolutely incorrect. हमारे भारत के संविधान में तो ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं. It is in the RBI Act, not the Constitution of India.
Second statement will be wrong. Now, if you do not know the third statement, now you can use elimination technique. First statement is correct, second is wrong. So A can be eliminated, B can be eliminated, D can be eliminated. So the correct answer will be, it is C. So this is how, if you know out of the 3 or 4 statements, if you know 1 or 2 statement absolutely correctly, then you can easily use the elimination technique. अगर आप 3 statement दिए हैं या आपको 4 statement दिए हैं, उसमें से कोई एक statement भी आपको ढंग से पता है ना, 1 या 2 statement, तो आप elimination technique use कर सकते हो. So here C is the correct answer. Okay. Unacademy is launching UPSC CSE Combat on October 17th, 2021 at 11 a.m. in the morning. It will be an all-India free scholarship test which will have 50 questions. You have to solve these questions in 60 minutes. It will be a history and polity special test and you stand a chance to win scholarship from a pool of rupees 4 crore. What you have to do is simply download the Unacademy learning app, click on the link which is provided below in the description box and use the invite code Arpita10 ARPITA10 and enroll now. Give this test live in order to get your All India rank as well. After the test ends, you will be getting video solutions by top educators on Unacademy. Enroll now. Coming on to the second question. With reference to casual workers employed in India, consider the following statements. All casual workers are entitled for employees' provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. Government can, by a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Again, this question is conceptual plus current affairs based. इस क्वेश्चन को करंट अफेयर से आइडिया लिया गया इस क्वेश्चन का. द आइडिया ऑफ फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द करंट अफेयर्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देयर वाज हाई केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिंस 2020. बट here in the current affairs they are testing your conceptual clarity. They are testing if you are just reading and mugging up the current affairs or you are analyzing the current affairs like we do in our daily news analysis lectures. यहाँ पर टेस्ट क्या करने की कोशिश हो रही है यूपीएससी के द्वारा कि करंट अफेयर्स तो सबने पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कैजुअल वर्कर्स के बारे में, लेबरर्स के बारे में, बट क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन्हें है कैजुअल वर्कर्स की कंडीशन के ऊपर? ये आपका टेस्टिंग टाइम है, ये आपका टेस्ट किया जाता है कि आप कंसेप्चुअली कितना क्लियर हो करंट अफेयर्स के साथ. सो दोज ऑफ यू हु आर स्टिल मगिंग अप द करंट अफेयर्स, स्टॉप इट राइट नाउ. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो जस्ट फोकस ऑन एनालाइजिंग द करंट अफेयर्स इंस्टेड ऑफ मगिंग देम अप. जितने भी आप में से स्टूडेंट्स हैं जो आज तक करंट अफेयर्स का रट्टा लगा रहे थे, अभी बंद कर दो रट्टा लगाना और एनालाइज करना शुरू कर दो चीजों को, बारीकी से समझना शुरू कर दो चीजों को. ठीक है. सो कैजुअल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स, चाहे वो नॉन फार्म एंटरप्राइज हो या फार्मिंग एंटरप्राइज हो, एंड दे आर पेड वेजेस दैट आर आइदर डेली और पीरियोडिक इन नेचर. ओके. And in India, we are saying that labor codes are being amended day and night, and there are international labor codes which have been in news. So you are either, some students are either busy in mugging up the labor codes, and some other students are busy in understanding the labor codes conceptually. And this question can be solved by those students only whose conceptual clarity is on point. So here the correct answer will be, first of all, statement 1, all casual workers are entitled for EPF. No. यहाँ पर ऑल जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दैट इज इनकरेक्ट. कंडीशन होते हैं 15,000 और लेस की इनकम होती है, दैट इज द कंडीशन फॉर ईपीएफ. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट, करेक्ट, वेरी गुड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये तो न्यूज में भी था, इट वाज इन द न्यूज आल्सो. द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, वेरी करेक्ट, बहुत ही सही स्टेटमेंट है, सही है ये. So B is correct. And again, if you know that first statement is wrong, you can use elimination method. अगर आपको पता है first statement wrong है, तो आप elimination method के through you can achieve, go on to the correct option. Here also elimination technique can be used very wonderfully. अगर आपने EPF के बारे में पढ़ा है in the news, and we have so many times studied about employees provident fund in our Hindu daily news analysis lectures. Okay. So again, B is the correct answer over here. The next question, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? So what is a recession? Recession is a period of decrease in the economic performance across an entire economy for several months. That is recession.
And in a recession, consumers they may reduce spending. ओके, रिसेशन में क्या होगा, कंज्यूमर्स जो होंगे वो अपनी स्पेंडिंग जो अपना खर्चा है वो कम कर देंगे, विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर सेविंग. So if the government spending causes the unemployed to gain jobs, then they will have more income to spend, leading to further increase in aggregate demand. So here, as per me, the correct option will be B. Okay, increase in expenditure on public projects. Coming on to the next question, consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if price of its substitute increases, price of its complement increases, good is an inferior good and income of consumers increase, its price falls. Both these questions are NCERT based. ये दोनों ही क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 11th, क्लास 12th, बेसिकली क्लास 12th. ओके, क्लास 12th की NCERT जो है इंडियन इकोनॉमिक्स की डायरेक्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बाकी चीजें सेम है, अनचेंज्ड है. मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, मार्केट डिमांड जो है गुड का इंक्रीज हो सकता है अगर प्राइस जो है उसके सब्स्टिट्यूट का वो इंक्रीज हो जाए, प्राइस उसके कॉम्प्लीमेंट का इंक्रीज हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूट एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, two goods in microeconomics, they are known as substitutes if the products could be used for the same purpose by the consumers. That is, consumer perceives both the goods as similar or comparable. For example, McDonald's का burger and Burger King का burger. For example, Domino's का pizza and Pizza Hut का pizza. Coke and Pepsi, or tea and coffee, Fanta and Crush, Kindle and books printed on paper. Okay, potatoes in one supermarket and potatoes in another supermarket. Those are substitute goods, comparable, almost similar. Now the complementary goods. Complementary good is a product or service that adds value to another. In other words, they are two goods that the consumer uses together. दो ऐसे goods जो कि consumer साथ में use करता है, जैसे कि printer and ink cartridge, mobile phones and SIM card, cereal and milk, okay, car and petrol or car and diesel. That are complementary goods. Now here second statement can be wrong. Why? Because अगर complement product का price कम हो जाए तो उस original product का price तो demand तो बढ़ जाएगा ना. Okay, for example, if mobile phones its price it falls down, mobile phone का जो price है वो गिर गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, let us say SIM card का price गिर गया, या चलो SIM card and mobile phone को छोड़ो, let us say petrol का price गिर गया. Okay, petrol's price comes down. So demand for car will increase ना, कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. लेट्स से सीरियल का प्राइस गिर गया आपका, ठीक है, सॉरी मिल्क का प्राइस गिर गया, तो सीरियल्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा मिल्क लेंगे और मिल्क के साथ सीरियल्स खाते हैं तो सीरियल्स भी ज्यादा लेंगे. ओके, बट इफ पेट्रोल्स प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग, सो पीपल विल टेक अ बैक सीट व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग कार. सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी एलिमिनेटेड. बी को हटा दो, डी को हटा दो, वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी. Now the first statement says price of its substitute increases. Now let's in the case of substitute goods, let's take an example of McDonald का burger and Burger King का burger. Okay, ये दो goods ले लेते हैं example. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase. Let's say market demand for a good is Burger King का good. Okay, it might increase if price of its substitute increases. If McDonald का price बढ़ जाता है तो क्या इसकी demand बढ़ जाएगी? Yes. Because now less number of people will go to McDonald's for eating burger because it is costly. लोग जनरली कहाँ जाएंगे, बर्गर किंग के पास ही जाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है. Now coming on to the third, good is an inferior good and income of the consumer increases. Now let us see what is inferior good. Good whose demand decreases when consumer income rises. वो गुड जिसका डिमांड तब डिक्रीज हो जाता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो उससे बढ़िया अच्छा नॉर्मल गुड लेने के लिए जाएगा. नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस. इंफीरियर गुड में क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, उससे अच्छी क्वालिटी का गुड या सर्विस लेने के लिए कंज्यूमर जाता है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है. सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल डिक्रीज. डिमांड इंक्रीज तो होगा नहीं. थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, सो एलिमिनेट सी ऑल्सो. So you are left with A. Fourth is also right. If the price of a good falls, then the demand increases. 1 and 4 are absolutely correct. Elimination technique, again common sense and elimination technique together you can use to
mark this question correctly. इसमें देखो क्या है, simple questions है. अभी तक so far the questions we have seen, these questions are simple common sense based questions based on your analytical skills and elimination technique. That's it. Tough तो कुछ भी नहीं है अभी तक, है ना? The next question, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statements. They are supervised and regulated by local boards set up by state governments. They can issue equity shares and preference shares. They were brought under purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. First, let us understand about urban cooperative banks. ये proper current affair based question plus Indian polity का amalgamation है. समझ आ रही है बात? Indian polity, थोड़ा सा Indian economy, basically Indian economy को आप ले लो on current affairs. Urban cooperative banks जो होते हैं, they are not formally defined, okay? So they are primary cooperative banks जो कि urban और semi urban areas में located होते हैं, okay? Now ये जो banks हैं, ये till 1996 they were allowed to lend money only for non-agriculture purpose, but अभी ऐसा नहीं है, agriculture purpose के लिए भी they can give the loans. Now look at the first statement. They are supervised and regulated by local boards set up by state governments. No. See here, the urban cooperative banks have duality of control. Duality of control means RBI and center and state both regulates their functions. Okay, and in center and state there is specifically registrar of cooperative societies who regulates it. ठीक है, तो सुपरविजन और रेगुलेशन इसकी अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज करते हैं. तो यहाँ पर बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड फुल स्टॉप इज रॉन्ग. इट शुड बी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू कैन एलिमिनेट ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है ना तो आप इजीली यू कैन गो टुवर्ड्स द आंसर. करेक्ट आंसर विल बी बी. करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा. Now this is a current affair based topic. Why do I say so? Because in 2020 an amendment was made in urban cooperative banks. 2020 में amendment हुआ था and these 2 points were added in the amendments. So those students who were very disciplined and focused when reading the newspapers, only those students would mark this question correctly. Point clear हो रहा है? This is how you have to mark and this is how you have to read the current affairs. समझो, रट्टो मत. Students who have crammed the current affairs, they cried in today's paper. And students who were very diligently disciplined in a disciplined manner, they were analyzing the current affairs and then studying them. Those students found these, questions very easy to solve. Within seconds, they could predict the answers. Coming on to the next question. Indian government bond yields are influenced by which of the following? Government bond yields, ये हमने कितनी बार हिंदू न्यूज एनालिसिस में पढ़ा है. तो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ये? एक्शंस ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ आरबीआई, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. नाउ दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अगेन करंट अफेयर्स. ये करंट अफेयर्स बेस्ड है. व्हाई? बिकॉज इन मे 2021 द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स वर इन न्यूज. ओके, so here basic concept, interest rates in economy when they go up, bond price goes down and bond yield goes up. ओके, ये बेसिक आपका इंटर रिलेशन है जो आपको याद रखना है. सो बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर रियलाइजेस ऑन अ बॉन्ड. मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यील्ड इज एनुअल कूपन रेट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जिससे मनी बोरो किया जा सकता है. एंड बॉन्ड कुड बी इशूड बाय कंट्रीज गवर्नमेंट और बाय कंपनी टू रेज फंड्स. ओके, एंड व्हाट इज कूपन रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बॉन्ड इशूअर्स के द्वारा पे किया जाता है बॉन्ड की फेस वैल्यू पर. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व. सो यूनाइटेड स्टेट की फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूएस इंस्टेड ऑफ इंडिया. ओके, एंड व्हाट दे डू? दे एफपीआई इन्वेस्टर्स दे सेल द बॉन्ड हियर इन इंडिया. जब वो यूएस की तरफ जाने लगते हैं तो वो इंडिया में बॉन्ड्स को बेच देते हैं. दे परचेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, they purchase the private sector bonds also. So when the FPI investors they sell bonds in India, the price decreases, bond का price decrease हो जाता है. And when the price will decrease, yield will increase. Point clear हो रहा है? This relation you have to remember. इसको please make a flow chart of this box over here. Okay, please draw this box in your register. When the United States Federal Reserve increase the rates, the FPI investors in India they will move to US. Before moving to US, they will send their bonds in India. Bond price will decrease because of that and then bond yield will increase. So here
Indian government bond yields will get impacted by first statement. So statement 1 is correct. Statement 1 correct है तो B eliminate कर दो, C eliminate कर दो. Actions of Reserve Bank of India, yes. RBI कोई एक्शन लेगा तो बॉन्ड यील्ड पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके. Reserve Bank of India when it changes interest, तो उस केस में the entire economy as well as the bond yield will get impacted. Inflation and short term interest rate, correct. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन आपके इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करता है एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर इम्पैक्टेड द बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस विल गेट इम्पैक्टेड. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन टेकन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. ये क्वेश्चन भी आपका इंडियन इकोनॉमी से ही लिया गया क्वेश्चन है. द लास्ट क्वेश्चन वाज आल्सो टेकन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमी का. So far we have solved one Indian polity based question. एक हमने ये Indian polity का based question solve किया. Sorry, Indian economy का ही question था ये भी basically. हाँ, polity based था. Okay. Then we solved another question Indian economy polity से related. उसके बाद ये आपने economy के 2 question solve किए. Now the next question, consider the following the foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits. Which of the above can be included in foreign direct investment? Very easy question. ये तो बहुत ही easy question है. इसको जो गलत मार्क करके आया है मतलब उसका basic concept clear नहीं है. If you have marked this question incorrectly, that means your conceptual clarity is weak right now. Foreign direct investment, इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स ऑप्शंस इंक्लूड होंगे, जल्दी से बताओ. 10 seconds टाइम. नाउ यू नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट शेयर्स, इक्विटी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसकी बात करता है? इक्विटी की, शेयर्स की. हियर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. ओके. सेकंड इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस. यस. Condition means if they can increase the limit beyond 10%, they can be treated as equity. So second statement is also correct. First and 2 are correct. C can be eliminated, B can be eliminated, and D can be eliminated. So because second is correct, na, so you can eliminate D. So you will be left with A, 1, 2, and 3. समझ आ रही है बात? This is again elimination technique that I have used over here. If you have slight idea of the question of the statements, you can very well use the elimination technique in all the questions. Fourth statement, why it is not in FDI? Because NRI deposits जो होते हैं वो debt deposits होते हैं and the FDI are all about equity and shares. So fourth cannot be the correct option. Point clear हो गया? All right. Now the next question, 8th question, consider the following statements. Effect of devaluation of a currency is that, again Indian economy based question है ये भी आपका, यानी कि starting के all the questions are Indian economy based. Okay. Again devaluation of a currency, newspaper में आप ये concept पढ़ते हो. This is a conceptual clarity based question. All these questions are conceptual clarity based questions. So UPSC basically is testing your conceptual clarity. आपके concepts कितने clear हैं वो test कर रहा है हर question में UPSC. In all these questions. Okay. So here you have to make sure that whatever you study, your concepts are 100% clear. Because when you don't understand anything, you cram it, you will not be able to give your best in an analytical test. Okay. UPSC is an analytical test. So effect of devaluation of a currency is that it necessarily improves competitiveness of domestic exports in foreign markets, increases foreign value of domestic currency, improves the trade balance. कौन सा statement correct है? It's a simple question but again it is a little tricky. Simple तो है question but थोड़ा सा tricky है. Now first statement, improves competitiveness of domestic exports. Effect of devaluation of a currency की competitiveness जो domestic exports की है foreign market में वो बढ़ improve हो जाएगी. If we devalue the currency, foreign currency will appreciate. First is true. Second, increases foreign value of domestic currency. Second तो बिल्कुल correct है. ठीक है, अगर हम अपनी currency को devalue करें, foreign currency appreciate होगी. ट्रेड बैलेंस improves the trade balance. ट्रेड बैलेंस means overall export minus import. अगर हम करेंसी को डिवैल्यू कर दें हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. But here third statement is saying improves trade balance. That we cannot say because trade balance is not just dependent on valuation of a currency. There are other factors also.
ट्रेड बैलेंस जो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो सिर्फ करेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, काफी बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, कंट्री की इंटरनल सिचुएशन एटसेट्रा। ओके, तो हम थर्ड पॉइंट पे कुछ नहीं कह सकते। सो 1 and 2 आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट कैन बी एलिमिनेटेड, डी कैन बी एलिमिनेटेड, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात? So we cannot say about this because this is not dependent on valuation of currency. Okay, so 1 and 2 are absolutely correct. So that is why B will be the, they have given this option also 1 and 2. Okay. Ninth question, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to government of India? Black money, money laundering, terrorist financing, all of these have been in news since the last 2 years. Okay, so do not tell me that you have marked this question incorrectly. मुझे ये मत बोलना कि आपने ये क्वेश्चन गलत मार्क किया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Which one of the following effects, ब्लैक मनी को क्रिएट करने के ये जो कौन से इनमें से ऐसे इफेक्ट हैं जो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा चिंताजनक हैं? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एटसेट्रा, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, loss of revenue to state and exchequer due to tax evasion. See, all of these have been cause of worry, but they are asking the main cause of worry. And because of black money, money laundering, what happens? Tax evasion happens. अभी Panama Papers पढ़ा था ना हमने? Sorry, not Panama Papers, Pandora Papers, right? उसमें हमने क्या पढ़ा था? We studied in detail. उस Pandora Papers के lecture में we studied in detail the main cause of worry. That is loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. Unacademy is launching new batches for UPSC CSE preparation for the 2022 and 23 aspirants starting from 13th of October. That is after 3 days. We have batches separately in Hindi for Hindi medium students and in English for English medium students. So if you are the one who are preparing for 2022 and 23 and if you want to make your conceptual clarity much more stronger, if you want to study subjects and current affairs from the perspective of analytical understanding and not just for cramming, then here is your chance to get guided by India's top educators for UPSC CSE preparation. On Unacademy Plus, we are also giving you 10% discount on your Plus subscription if you use code ARPITA10. अगर आप ये कोड यूज करते हो ARPITA10 तो आपको 10% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट भी मिलेगा Unacademy पर। And also for the 2021 aspirants who are aiming for mains, आज का पेपर जिनका बहुत अच्छा हुआ है, जिनको लग रहा है वो 100 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं और मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमने मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 बैच लॉन्च किया है जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 मंथ्स का बैच होगा जिसमें आपको ओवरऑल पूरा मेंस के लिए ट्रेन किया जाएगा। So make sure that you take your subscription today. The link is given below in the description box. Use code ARPITA10 to get 10% discount and subscribe today. The next question, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Again, Indian economy, and ये NCERT based question है, class 12th. So the question is, which one of the following is likely to be most inflationary in its effect? अपने effect में सबसे ज़्यादा inflationary. Inflationary means when the price rises all of a sudden, spikes all of a sudden. Repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit. This question has been copied from 2013 prelims question paper and that's why I say practice PYQs as it is copied and pasted. ये copy paste question है 2013 के prelims के question paper से लिया गया है as it is. Okay? तो इसमें क्या है कि आपको PYQs, see, analyzing these question papers makes you understand how to do the smart study. स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो कैसे पता चलता है जब आप PYQs देखते हो। देखो इसे कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आ गया। सो if the student has practiced last 10 to 13 years question papers, he or she can easily answer this question. Okay, so repayment of public debt, no. Borrowing from public to finance a budget deficit, absolutely no. Borrowing from the banks to finance a budget deficit, again public से और बैंक से, no. Correct answer D, creation of new money to finance a budget deficit. So D is the correct answer for question number 10. Okay, so these were the 10 questions. ये थे आज के आपके 10 questions जो हमने solve किए. Now the next 10 questions we'll be making lecture separately for those and ऐसे करके हम पूरा question paper solve करेंगे. So in 30 minutes we have analyzed the first 10 questions of today's question paper. Okay,
I hope you enjoyed this lecture. अच्छा लगा lecture? देखो कितना easy था. The 2022 and 23 aspirants, see, UPSC is targeting your analytical skills even in the preliminary section. That is why it is set competitive exam. अगर ये competitive exam analytical नहीं होता तो फिर ये तो college based exam हो जाता ना. आप आराम से कुछ भी आंसर कैसे भी रट्टाबाजी करके पास हो जाते. But it is competitive for a reason only. ये competitive है एक reason की वजह से. Because analytical skills, your common sense is tested. Okay. Then what is tested? Your smart study is tested. आप कितना smartly पढ़ रहे हो चीजों को. Your conceptual clarity is tested. Okay. These are the things. And plus PYQs. I told you last question was taken from 2013's prelims question paper. You can match also. Okay. So this was set A. ये हमने set A आज हम लेकर चल रहे हैं. ठीक है. So I hope you enjoyed this lecture. Do share this lecture with your other aspirants also.